myself, I'm Sanjana Patel. Today we'll be covering how to solve backlogs in GTU and Python concepts from basic to intermediate level. अरे यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, असाइनमेंट रीड कर लेती हूँ। इतने सारे पेजेस हैं, कैसे रीड पाऊंगी? टाइम भी मेरे पास कम है। एक काम करती हूँ, मैं यूट्यूब पे से IMP क्वेश्चन और लास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। अरे यार कुछ याद ही नहीं रहता, अब मैं क्या करूँ? कैसे रीड करूँ मैं? कुछ सॉल्यूशन भी नहीं मेरे पास, अब टाइम भी कम है और रीडिंग भी ज़्यादा है मेरे पास। अब मैं क्या करूँ? अरे यार मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, मैं एग्ज़ाम में आज क्या लिख पाऊंगी? कल भी मैं इतनी कंफ्यूज थी, आज भी इतनी कंफ्यूज हूँ। अरे अब मैं एग्ज़ाम में क्या लिखूंगी? पाइथन में बैकलॉग आई। सैड मत तो, हम सब मिलकर कवर करवा लेंगे तेरे सारे टॉपिक। रो मत, चुप हो जा। डोंट वरी रितु, तू चिंता मत कर, हम सब है ना, तुझे कवर अप करवा लेंगे। अरे हम तुझे बेसिक से सिखा देंगे, तो टेंशन मत ले। हाँ मैं करवा दूंगी। अरे पर कैसे हो पाएगा? हम सब है ना, हम सब तुझे थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे और अब तुझे तेरी बैकलॉग क्लियर करवा देंगे, तो चिंता मत कर, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट, ओके? If we want to print any character, any string, any sentence with the use of Python, so first of all we have to write print rounded brackets, inverted comma, hello world, and let's run this. See, here we got our output. Let's start with some basics. Dictionary is one of the data structure of Python. Here it is variable. Variable means what? In variable we can store multiple values, and dictionary we can represent dictionary by curly brackets. Here 1 is our key and here 22 is our value. We can store multiple values in single key. So let's run this. Here is our output. Here another example of dictionary which is being done for you. Here student is one variable in which multiple keys and values are there. We can fetch value through keys. Here 22 is key, and what it gives the 22th value,
And another method of fetching value is dot get method. In here 44 is our key and it gives 42th value. Here we got our output Janvi and Priya. Janvi is 22th value and Priya is 44th value. Here an example of looping in Python. Looping means what? Looping means if we want to print values multiple times, then we have to use loop. Here we can use for loop. For x, x means what? X is a variable in which we stored values. In marks, marks means what? The values which we have created already in the variable. And now print x. And let's run this. You can see here we can got our output sequence wise. Here is an example of list. List is another type of data structure of Python. We can represent list by square brackets only. Here -1 will return the reverse order of the list. Let's run this. Looping can be also done through while loop. While loop is another type of looping. Here print, press 1 for square, press 2 for cube, press 3 for exit. OP is a variable, you can give any name. Integer means what? If the user gives integer value, it means number value, so we have to write integer input, enter option. Then if option 1 and our condition. If user chooses the option 1, it will execute the if statement. If user chooses the option 2, it will execute the elif statement. If user chooses the option 3, it will execute the option 3 elif statement. Otherwise, it will execute the else statement. So now let's run this. Let's learn about exception handling in Python. If the code may occur any exception, so the code placed into the try block. And if any exception occurs, so except block will catch the exception. Either the code raises an exception or not, but the finally block will always execute. See, here we got our output.